Good evening, children. So, children, today I am going to start the topic that is climate. See, the main outlines of the chapter are climate of India, annual cycle of seasons, and distribution of precipitation. Now, let's come to the point. See, children, firstly, I should tell you about climate. That what is climate? Let's talk about the topic climate of India. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about climate of India. Climate is the long-term effect of the sun's radiation on the rotating Earth's surface and atmosphere. It can be understood most easily in terms of annual or seasonal averages of temperature and precipitation. If in short I talk about climate, climate होता क्या है? Climate refers to the sum of total weather conditions. Climate refers to the sum of total weather conditions and variations over a long period of time. On the other side, if I talk about weather, I would say weather on the other hand refers to the state of atmosphere at any point of time and space. Now, if I talk about the elements of weather, अगर हम लोग बात करते हैं elements of weather की, the elements of weather and climate are the same. That is temperature, atmosphere, pressure, wind, humidity and precipitation. Weather conditions fluctuate very often within a day. देखो एक ही दिन के अंदर एक ही दिन में वेदर कंडीशंस बहुत बार बदलती रहती हैं. बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और ए मंथ. लेकिन कई बार क्या होता है कि एक हफ्ते तक एक जैसा सीजन रहा, क्लाइमेट एक जैसा रहा, फिर एक महीने तक वैसा ही क्लाइमेट रहा. द डेज आर कूल और हॉट. ये देखो या तो दिन गर्म रहते हैं या ठंडे रहते हैं. विंडी और काम हवा चलती है, हवा एकदम नहीं चलती है. क्लाउडी और ब्राइट, वेट और ड्राई एक्सेट्रा. मतलब ये जो ऐसे मौसम बदलते हैं, जो सीजन्स में चेंज आते हैं, जैसे अब का टाइम आ रहा है तो अब जो सुबह का टाइम होगा अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट, द टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहेगा. डेज जो होते हैं अब धीरे धीरे अब टेम्परेचर गिरता जा रहा है तो डेज जो हो रहे हैं बिट कूलर हो रहे हैं. ड्यू टू द पेनिनसुलैरिटी, unusual topography and geographical position. Due to the peninsularity, unusual topography and geographical position of India, climatic conditions are widely diversified on both a regional and seasonal basis. देखो अलग अलग regions में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट मिलेगा अलग अलग सीजन पे. रीजन एज वेल एज सीजन ये डिपेंड करता है. रीजन अलग है तो अलग टाइप का मिलेगा सीजन. हमें दूसरे एरिया में जाते तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन मिलेगा. दिस डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ एक्सट्रीम्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जोन्स. द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आर confined largely to the slopes of Himalayas. The temperature extremes are confined largely to the slopes of the Himalayas. Except in the more mountainous regions, जो बहुत पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, the rest of India has a uniform tropical climate. अगर उन एरियाज को हम छोड़ देते हैं जो माउंटेनर एरियाज है तो लगभग पूरे भारत में एक जैसा यूनिफॉर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है. Seasonal variations resulting from the southwestern and northeastern monsoons
profoundly influence temperature, humidity, and precipitation throughout the subcontinent. देखो सीजनल जब वेरिएशंस होते हैं तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आता है, ह्यूमिडिटी में बदलाव आता है और प्रेसिपिटेशन में उस पूरे सब कॉन्टिनेंट में चेंजेस रहते हैं. So children, I would like to tell you one point. The appearance of the monsoon wind pattern over geological time has been linked through sedimentary evidences to the uplift of the Himalayas and the Tibetan plateau as the Indian subcontinent began to collide with the Asian crustal plate about 20 million years ago. The northern landmass was high enough by about 6 million years ago to cause air rising from the southern landmass to be replaced by the monsoon, establishing this wind pattern. Monsoons in a weaker forms also occur in other parts of the world. और जो ये पूरा वर्ल्ड है, in that it occurs, monsoon जो होता है पूरे हर part of the world में ये आता है. See children, we use the word monsoon. The climate of India is described as monsoon type. हम भारत के क्लाइमेट को किस टाइप से डिस्क्राइब करते हैं? मॉनसून टाइप के. अब हम लोग बात करते हैं मॉनसून होता क्या है, मॉनसून कहाँ से आया है. मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड. मॉनसून हैज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड एंड दैट इज मौसम, which literally means season. Monsoon winds change directions with the change of seasons. The monsoon prevails mainly in the Indian Ocean. Point को ध्यान रखना, 2 points I've stated. Monsoon winds change direction with the change of season. Season में बदलाव होता है तो monsoon winds जो होती है उसमें changes आते हैं. The monsoon prevails mainly in the Indian Ocean. और जो पूरा कंट्रोलिंग होती है वो कहाँ से प्रिवेल होता है? फ्रॉम द इंडियन ओशियन. इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट. इट ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट जनरली फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर एंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल. द साउथ वेस्ट और समर मानसून, या तो मैं साउथ वेस्ट कहूँ और समर मानसून कहूँ, लेट्स टॉक ओवर दैट. द साउथ वेस्ट और समर मानसून अकर्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द इंडियन ओशियन ब्लोज ऑन टू द लैंड एंड इज यूजुअली accompanied. और जब ये इंडियन ओशियन ब्लो करता है, जब मॉइस्ट एयर जो मूव करती है फ्रॉम द इंडियन ओशियन ब्लोज इनटू लैंड, और ये अकम्पनी इसके साथ क्या चीज़ होती है? हैवी रेन इन एरियाज ऑफ इंडिया. इट गिव्स बर्थ टू हैवी रेन इन एरियाज ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में उस समय बारिश होती है. कंस्टिट्यूटिंग द डोमिनेंट क्लाइमेट event of the area. The northeast monsoon occurs in India when cold, dry winter air blows out of the interior of Asia from the northeast and brings the cool, dry winter season. और दूसरी तरफ से क्या होता है? From the northeast and brings the cool, dry winter season. दो इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो दो इंडिया हैज़ एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल क्लाइमेटिक पैटर्न. अगर हम लोग जनरल क्लाइमेटिक पैटर्न की बात करें तो पूरे भारत में यूनिटी है. देयर आर मैनी रीजनल वेरिएशंस. देखो कई सारे इसमें रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हमारे 2 पॉइंट हैं.
two of the important elements, जो सबसे important दो points हैं, two of the important elements that affect the climate of India are temperature and precipitation. दो words हैं, temperature और precipitation. अच्छा देखो, you all would be knowing the definition of temperature. Let me talk about precipitation. What is the meaning of the word precipitation? Anybody can tell me the meaning of the word precipitation? Yes, children? Any one of you? Devansh, Kovid, Akhil, Vaibhav, Priyansh. Just define precipitation. What do you mean by precipitation? Nikhil? Okay. Now, let me tell you the meaning of the word precipitation. Vaibhav Sachan, write the definition. Now, let me tell you the meaning of the word precipitation. Any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the earth like rain, sleet, snow, etc. That is known as precipitation. Again, I am repeating the definition. Any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the earth like rain, sleet, snow, etc. is known as precipitation. Now children, let us talk about, or let us examine how these two elements vary from place to place. देखो temperature और precipitation हर जगह पे बदलती रहती है and from season to season. During the summer season, जब summer season होता है इंडिया में, the temperature may rise to reach 50 degree Celsius. कई बार temperature में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और वो पहुंच जाता है 50 डिग्री तक. और मोर इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, या राजस्थान के कुछ पार्ट्स में वो उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है. द थार डेजर्ट इज लोकेटेड हियर. जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में. ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर में बी 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम. और वही अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहलगाम में वहाँ टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे है राजस्थान में वहाँ पे है 50 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है. वहाँ पे उस समय ये टेम्परेचर और इस साइड ये टेम्परेचर. ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर इन द्रास सेक्टर इन लद्दाख मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस. At this time, Thiruvananthapuram in Kerala experiences a temperature of 20 degree Celsius. And you know children, one more thing, I hope so you would be knowing. In the Thar desert, the temperature may rise. In the Thar desert, जो दिन का temperature होता है, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. मतलब दिन में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और शाम के समय, रात के समय वही टेम्परेचर गिर जाता है और वो आ जाता है सीधा 15 डिग्री पे. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस in day and night temperatures in Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. We can thus ascertain that India experiences, अब हम लोग ये ascertain कर सकते हैं, मान सकते हैं
that India experiences vast variations in temperature. These variations may also be in day and night temperatures. For example, a person in the Thar Desert, Rajasthan, may experience a hot day with temperature rising to 50 degrees Celsius, but he would feel cold at night. He would feel cold at night when the temperature drops to freezing point in the same night. While in the coastal areas, जो हमारे coastal areas होते हैं, केरला की बात करें या the islands groups of India, that night and day temperature may not vary much. यहाँ पे जो केरला वाली बेल्ट है या जो दूसरे आइलैंड्स वाली बेल्ट है, यहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है दिन और रात में. They would remain 7 degree Celsius to 8 degree Celsius. दिन रात में कोई फर्क नहीं आता है केरला और उसके आसपास के बेल्ट्स पे. तो जहाँ तक रेनफॉल की बात है, as far as rainfall and precipitation are concerned, जहाँ पे दोनों की हम बात करते हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन की, तो variations are found both in the form and amount. इन दोनों चीज में वेरिएशन मिलेगी in the form and its amount. Seasonal distribution is also a major distributive factor in India. Remember the word seasonal distribution. The Himalayan region mostly experiences snowfall, while the rest of the country receives rain. The annual precipitation is between 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in western Rajasthan और लद्दाख. देखो, जो अगर हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो 400 सेंटीमीटर मेघालय में है और यही हम वेस्टर्न राजस्थान या लद्दाख में आ जाते हैं तो 10 सेंटीमीटर पे आ जाता है. द डिफरेंस इज ऑफ नियरली 390 सेंटीमीटर. कोस्टल तमिलनाडु, जो कोस्टल तमिलनाडु है, इट रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेन in early autumn or winter. On the other hand, most of India receives rainfall from June to September. जो मैक्सिमम हम लोग क्या रेनफॉल होती है वो होती है जून से सितंबर के बीच में. The rains in Tamil Nadu are brought in by the northeast monsoon. वही अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें, the rains in Tamil Nadu are brought in by the northeast monsoons, while northern India experiences rainfall in winter. और जो northern India है वहाँ पे बारिश होती है winter season में due to the western disturbances. Remember the word due to the western disturbances. जो winter season होता है उसमें यहाँ पे बारिश होती है in this season. ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो तमिलनाडु वाली एरिया है हमारी, इसमें ठंडियों में बारिश होती है. ओके, if we talk about the coastal areas, generally the coastal regions have minimum contrasts in temperatures. The interior of the country experiences more seasonal contrasts. The decrease in rainfall is generally observed from east to west in the northern plains. These variations have been a major factor in determining the lifestyle of people, which include their clothing, housing and food habits. देखो, जो हम लोग के कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ जो टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है, तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है, सो ये जो वेरिएशंस होते हैं क्लाइमेट में हमारे, दे हैव बीन अ मेजर फैक्टर इन
determining the lifestyle of people, चाहे वो उनके खाने की बात करें हम, चाहे खाने की हैबिट्स हो, चाहे हाउसिंग की हो, चाहे क्लॉथिंग की हो, इन सब चीज़ों में वो चेंजेस रहते हैं. Now, let's talk about climatic controls. The climate of a place is controlled by 6 major factors. किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं 6 मेजर फैक्टर्स से. दे आर latitude, altitude, pressure and wind, distance from the sea. Distance from the sea is continentality, ocean currents and relief features. ये सारे फीचर्स होते हैं. Due to the spherical shape of the earth, due to the spherical shape of the earth, the amount of solar energy received varies. जो solar energy मिलती है उसमें भी variations होते हैं. Varies according to latitude. Again I am repeating the point. Due to the spherical shape of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitudes. Generally, as we move from equator towards the poles, the air temperature decreases. Altitudes also affect air temperature. जो एल्टीट्यूड्स होते हैं यहाँ पर भी एयर टेम्परेचर इफेक्ट करता है. एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स द एयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस. जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे लेस डेंस होगी, एयर बिकम्स लेस डेंस और टेम्परेचर गिरता जाएगा. दिस इज द रीजन दैट हिल्स आर कूलर इन समर्स एंड दिस इज द रूट कॉज that the hills are cooler in summers. See, latitude and altitude of a place determines the pressure and wind system. दो पॉइंट याद रखना, latitude and altitude. latitude और altitude किसी जगह का, वो हमें उसके प्रेशर और विंड सिस्टम, इन्हीं दो चीज़ों से डिसाइड होता है. latitude and altitude of a place determines the pressure and wind system of any area and the temperature and rainfall pattern. Sea exerts, जो sea होती है, समुद्र होते हैं, sea exerts a moderating influence on the climate of a place. With an increase in the distance from the sea, समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, with an increase in the distance from the sea, this moderating influence decreases and the place experiences extreme weather conditions. This type of weather condition, इस टाइप की जो weather conditions होती हैं, that is known as continentality. I'm writing this word. This word is known as continentality. That is very hot during summers and very cold during winters. बहुत गर्म रहेगा समर के सीजन में और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा विंटर के सीजन में. Along with onshore winds, the climate of the coastal areas is affected by ocean currents. For example, अगर मैं एग्जाम्पल ले लें तो cold currents make the coastal areas cold. Cold currents make the coastal areas cold, and warm currents raises the temperature of the coastal area. Till here, children, any doubt?
Children responded fast. Okay, थोड़ा सा मैं short में I would like to explain factors affecting शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. कुछ पॉइंट्स लेते हैं. सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल्टीट्यूड. क्या होता है? टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर डिक्रीज एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स. नेक्स्ट इज pressure and wind system. These influence the rainfall pattern and temperature. Then distance from the sea. The sea has a moderating influence on areas near it. This decreases as distance from the sea increases. Next point is ocean currents. Warm currents increase temperature of coastal areas near which they flow, while cold currents have the opposite effect. Next point is relief. Physical features such as mountains affect climate. Example, they act as barriers or may even cause precipitation. Next point is latitude. Because of curvature of the earth, the amount of solar energy received by the earth varies. अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, many factors are there. The first one is latitude. Let's talk about latitude. पहला word है latitude. See children, the Tropic of Cancer, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country. As you all know, that the Tropic of Cancer passes through the middle of the country and divides it into almost two equal parts. It runs from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half portion of India lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical areas, and the remaining area lying north of the Tropic of Cancer belongs to the subtropics. Through this way only, India's climate has characteristics of both tropical and subtropical climates. इन्हीं कंडीशन से कारण से जो हमारा इंडिया है, it has the characteristics of both tropical and subtropical climates. Now let's move to the other point. The other point is altitude and relief. See, the Himalayan mountains to the north of India have an average height of about 6,000 meters. Vast coastal areas have a maximum elevation of about 30 meters. These two areas experience
two different types of climate. In addition, the Himalayas act as a barrier and stop the cold winds from entering the subcontinent. Hence, India experiences, so that's why India experiences milder winters as compared to Central Asia. अगर हम लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया की ठंडी को कंपेयर करें तो इंडिया में ठंडी माइल्ड है, कम है एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया. व्हाई? बिकॉज हिमालय इज देयर. नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज विंड्स एंड प्रेशर. See, the atmospheric conditions that influence Indian weather and climate are distribution of atmospheric pressure and surface winds. My first point is distribution of atmospheric pressure and surface winds. The second point is upper air circulation. Third point, western disturbances during winter and tropical cyclones during the southwest monsoon. Third point is western disturbances during winter and tropical cyclones during the southwest monsoon. See children, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड को, if we observe the world map of pressure belts and planetary winds, we will find that India is in the area of northeast trade winds. इंडिया किस एरिया में आता है? In the area of northeast trade winds. These winds have their origin in the subtropical high pressure belts of the northern hemisphere. These winds blow southwards to the equatorial low pressure belt. These winds blow southwards to the equatorial low pressure belt. Then they get deflected. वहां से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, अलग डायरेक्शन में जाते हैं, to the right. Then they get deflected to the right, that is the west direction. Thus, the direction of these winds is from northeast to southwest. These winds lack moisture. ये जो हवा होती है इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है. And so are not rain bearing in nature. So इसके आने से, इस winds के आने से बारिश पे कुछ नहीं होने वाला, बारिश नहीं होगी. Even then, India is not a dry land. लेकिन फिर भी भारत जो है वो सूखा देश है. It's not a dry land. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं. Let us learn about the reason for this fact. क्या कारण है इसका? See, जो विंटर का समय होता है, during winter a high pressure area develops. During winter a high pressure area develops north of the Himalayas. At this time, cold and dry winds blow from cold north to warm south. One can observe cloudless skies at this time of year. When it is summer, the land gets more heated than water. अच्छा, जो गर्मियों का सीजन होता है, जो हमारी ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले. This leads to the development. इससे क्या होता है? Due to this, there is a development of low pressure area over the interior land areas of Asia. Therefore, air now moves from high pressure. जो यहाँ पे हवा होती है, therefore air now moves from high pressure area
over the southern Indian Ocean to the low pressure areas over the Indian subcontinent. अब इससे होता क्या है? There is a complete reversal in direction of winds occurs. This is what brings upon the southwest monsoons. और इससे क्या होता है? This is what which brings upon the southwest monsoons. These are the moisture-laden winds that herald rainfall in most parts of the countries. और जो ये moisture-laden होता है, these are the moisture-laden winds. ये जो हवा चलती है इसमें moisture होता है और इसी के कारण क्या होता है, जो लगभग पूरे कंट्री के हर पार्ट में there is a rainfall. तब यहाँ पे बारिश होती है. The higher level of the atmosphere experiences an altogether different pattern of air circulation over the western and central Asian regions. North of the Himalayas, a westerly air current blows. In the beginning of the class, I have used one word, that was Coriolis force. Now children, I would like to tell you about what is Coriolis force. ये क्या होती है? Coriolis force. Now, Coriolis force, this is a force. ये एक force होती है. This is a force caused by the Earth's rotation. जो अर्थ की रोटेशन होती है उससे ये force create होती है. This is the force caused by the Earth's rotation. This force is responsible for deflecting the winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Ferrel's law. Remember the word? This is also known as Ferrel's, Ferrel's, Ferrel's law. That's why it is known as Ferrel's law. Now, this fast blowing winds, जो winds होती है बहुत तेज चलती हैं. These fast blowing winds have a steady velocity and move in a narrow zone of the upper atmosphere. These winds are called jet streams. और इन हवा को हम लोग क्या कहते हैं? Jet streams. They are strong. जो jet streams होती हैं ये बहुत strong westerly winds होती हैं. They are strong westerly winds found in the troposphere at the height of 12,000 kilometers. Their speed varies from 110 km/h in summer to about 184 km/h in winter. The westerly jet stream gets divided into two streams after it meets a barrier in the Tibetan highlands. The southern branch blows in an eastward direction south of the Himalayas. It has a great influence on winter in India. The western disturbances find entry into India from the west.
जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है वो कहाँ से एंट्री लेती है इंडिया में? फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग विंटर्स एंड आर कैरीड इन बाय दीज एयर करेंट्स। अच्छा, जो समर का टाइम होता है, ड्यूरिंग समर द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थवर्ड्स टू प्लेस इटसेल्फ north of the Tian Shan in Central Asia. Later on, बाद में चल के an easterly jet stream takes its place to flow over northern India along 25° north. An eastern jet stream flows in peninsular India at 14° north during summer. Tropical depressions are brought into India by an easterly jet stream and low pressure region over land. Now 4-5 questions are there for you children. You have to answer them fast. You all are ready children? Send your response. So total 4-5 questions I am having. Now let's move to the first question. My first question is, which of the following place receives the highest rainfall in the world? इन जगहों में से सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है? The options are Silchar, the second one is Mason-Rem, the third one Cherrapunji, and the fourth one is Guwahati. The answer is option B. The correct answer is option B. Remember this children? That is Mason-Rem. Now the other question, my next question is, the wind blowing in the northern plains, in summers is known as Kal Baisakhi, Lu, trade winds, or option D, none of these. So क्या होगा इसका आंसर? Send the answer for this question. Kal Baisakhi, Lu, trade winds, none of these. Okay, let's check the answer of the B. Yes, right answer, good children. Your answer is correct. Now the next question. Third question is, which of the following causes rainfall during winters in northwestern part of India? Option A, cyclonic depression. Option B, retreating monsoon. Option C, western disturbances, or option D, southwest monsoon. Now tell the answer of this question. It's the last question for today children. Answer it fast. Okay, Anjana has given the answer. Okay children, this is the correct answer. Correct answer is option C. Okay, so children, in the next class I'll be starting from western cyclonic disturbances, and I hope so that this topics which we have studied today would have been clear to you.
And that's all for today, children.